गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली थर्ड फेज़ जो है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का उसको अप्रूवल दिया है। 7 to 10 करोड़ की जो है बजट एलोकेशन की गई है इसके लिए। तो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी 2005, ये एक ई कमेटी ने सबमिट किया था। ये ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने एक प्लान सबमिट किया था और उसके बेसिस पर एक तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कोर्ट्स में लाई जा रही है। तो ये एक तरह से नेशनल पॉलिसी है कंप्यूटराइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी की। एक पैन इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मॉनिटर और फंड कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जो है ये के लेवल तक पर भी ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब जो ये प्रोजेक्ट है इससे टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज दी जा रही हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ऑटोमेट किया जा रहा है प्रोसेसेस को, जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जा रहा है एक तरह से। ठीक है, तो जो पहला फेज़ था उसमें लगभग 14,500 के आसपास कोर्ट्स को जो है कंप्यूटराइज किया गया था। सेकेंड फेज़ में लगभग 19,000 डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को जो है वो कंप्यूटराइज किया गया था। और अगर हम देखें इसमें मेजर इनिशिएटिव्स कौन से हैं इस प्रोजेक्ट में, तो पहला तो आपका सबसे फेमस जो है वो है केस इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है कोर्ट्स के यूज़ करने के लिए। फिर अभी आपने रिसेंटली सुना होगा नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। और पेंडेंसी और डिस्पोजल ऑफ केसेस हाई कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में मॉनिटर करने का ये एक जो है प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। जो ये थर्ड फेज़ होगा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होगा और इसको 4 साल में कंप्लीट किया जाएगा। इसमें डिजिटाइजेशन ऑफ जितने भी कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज किया जाएगा। 2500 न्यू मॉडर्न वर्चुअल फ्रेंडली कोर्ट्स बनाए जाएंगे, 1150 वर्चुअल कोर्ट्स और बनाए जाएंगे। फिर 4400 ई सेवा केंद्र भी बनाए जाएंगे वर्चुअल कॉम्प्लेक्स, जितने भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ पर। लगभग 3108 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर जो है वो खुद को ऑनबोर्ड कर रहा है। तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो पोर्टल है वो कोर्ट की ओपन डेटा पॉलिसी का ही एक पार्ट है, जिससे कि अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी जुडिशियल डोमेन में। तो ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड 2015 में लॉन्च किया गया था जुडिशियल परफॉर्मेंस को जो है ट्रैक करने के लिए। तो ये एक नेशनल डेटा वेयर हाउस की तरह काम करता है, जिसमें सारा केस डेटा, चाहे ऑर्डर्स हों, जजमेंट्स हों, जो भी कोर्ट्स देते हैं कंट्री में, उनको आप आइडेंटिफाई, मैनेज और जो है ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस में एक रिडक्शन होने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप अब जो है पब्लिक डोमेन में कोई भी देख पाएगा कि कितने जो है क्या प्रोग्रेस चल रही है किसी भी केस में, पेंडेंसी ऑफ केसेस कौन से कोर्ट की कितनी है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ऑफ कोर्स इस मॉनिटरिंग के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो भी इंस्टीट्यूशनल लिटिगेंट्स हैं वो अपने केसेस की एवेल्यूएशन या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जो है इसकी वजह से जो है हमारी गवर्नमेंट्स को भी पॉलिसी डिसीजंस लेने में हेल्प होगा, ताकि कैसे हम डिस्पोजल ऑफ केसेस को जो है रिड्यूस कर सकते हैं जो डिले हो रहा है। कोर्ट की परफॉर्मेंस को बेटर मॉनिटर करने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट जो है वो नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2023 में जम्मू में जो है वो अनवेल किया है। तो ये एक ऑटोनोमस लोड बेयरिंग रोबोट है जो इंडियन आर्मी ने बनाया है, और इसको मैन्युफैक्चर जो है ह्यूमन लेस इंटरवेंशन के लिए जो है किया गया है, ताकि टेररिस्ट को लोकेट करके एलिमिनेट किया जा सके, ह्यूमन लाइफ को खतरे में डालने की कोशिश, ह्यूमन लाइफ को खतरे में डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें 360 डिग्री कैमराज लगे हैं, रडार्स लगे हैं, किसी भी थ्रेट को ये डिटेक्ट कर सकता है और फायरिंग भी कर सकता है उसको शूट डाउन करने के लिए। वाईफाई से या फिर LTE टेक्नोलॉजी से इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्री फाइड इसमें आप मिशंस जो है वो डाल सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो है टारगेट को आपने एलिमिनेट करना है, और ये माउंटेन्स भी जो है वो हैसल फ्री क्लाइम कर लेता है, जो है स्टेप्स को भी क्लाइम कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम देखें नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2023 क्या है, इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और IIT जम्मू द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड एक सिम्पोजियम है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स,
एग्जीबिशंस, इंटरेक्शंस, टेक्निकल सेमिनार्स, ये सब किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिरस क्लाउड्स। आपके इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यू स्टडी जो है वो दिखा रही है कि क्या स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन है थंडरस्टॉर्म्स के बीच में और सिरस क्लाउड्स के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। तो हम सिरस क्लाउड्स के बारे में अगर देखें तो एक डेलिकेट फेदरी क्लाउड्स होते हैं, ये आइसी क्रिस्टल्स के बने होते हैं, थिन और विस्पी अपीयरेंस में होते हैं, और ये वाइट और लाइट ग्रे कलर के हो सकते हैं। डे टाइम में ये वाइट रहते हैं, और जो है बाकी के जितने भी क्लाउड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वाइट ही दिखते हैं, ठीक है। तो इनकी हाइट जो है वो 20,000 फीट तक भी हो सकती है। इसमें जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उनसे ये बनते हैं, ठीक है। और ये सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह के फ्रीज होने की वजह से ये ओरिजिनेट होते हैं। फेयर वेदर कंडीशंस में जनरली आपको देखने को मिलेंगे, और ये एयर मूवमेंट जिस तरफ हो रही होती है उसी तरफ जो है ये क्लाउड्स भी चलते हैं। अगर हम देखें बाकी तरह के क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, तो ये पफी क्लाउड्स होते हैं और ये कॉटन की तरह दिखने को मिलेंगे आपको, बहुत बड़े क्लाउड्स हो सकते हैं ये। अगर ये बहुत लंबे नहीं हैं तो ये मतलब फेयर वेदर दिखा रहे हैं, अगर ये बहुत लंबे हो जाते हैं तो मतलब थंडरस्टॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। जो बॉटम होता है क्यूमुलस क्लाउड्स का, ये फेयरली क्लोज टू द ग्राउंड होता है। अगर ऐसे ही हम स्ट्रेटस क्लाउड्स के बारे में देखें तो ये लो लेवल क्लाउड फॉर्मेशंस होती हैं यूनिफॉर्म और फीचरलेस अपीयरेंस के साथ। ये कॉन्टिन्यूस ग्रेइश और वाइटिश ब्लैंकेट की तरह ये स्काई को कवर करते हैं, और इनका ऑल्टीट्यूड लगभग 2000 मीटर तक हो सकता है अबव सी लेवल। अब थंडरस्टॉर्म क्या होता है? कोई भी जो है इवेंट जिसमें लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, हैवी रेन होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स या हेल हो सकती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब वार्म मॉइस्ट एयर रैपिडली राइज करती है एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन की वजह से, उसको हम जो है थंडरस्टॉर्म कहते हैं। थंडरस्टॉर्म जो है साइज, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में वेरी कर सकती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मोटो जीपी। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एवर मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्रिक्स जो है वो पहली बार हो रहा है इंडिया में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। तो मोटो जीपी एक प्रीमियर मोटरसाइकिल चैंपियनशिप है वर्ल्ड की, ओल्डेस्ट मोटरशिप चैंपियनशिप इन द वर्ल्ड है, 1949 में स्टार्ट हुई थी। FIM इसकी गवर्निंग बॉडी है। एक नॉन स्टॉप रेस होती है स्टार्ट से फिनिश विदाउट एनी पिट स्टॉप्स, और ये रेस 40 से 45 मिनट तक लास्ट करती है, और लगभग 100 से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें कवर किया जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट। और इसमें पॉइंट्स बेसिस पर ये चैंपियनशिप को जो है वो विनर डिसाइड किया जाता है, और ये ईच राइडर जो है वो ईच टीम के जो है वो के लिए पॉइंट्स बनाता है, और उसके बेसिस पर ही जो है ये इसका डिसीजन लिया जाता है। अब मोटो जीपी 2023, इसमें 11 टीम्स और 22 राइडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 राइडर्स फ्रॉम ईच टीम। तो इसमें 21 ग्रैंड प्रिक्स रेसेस होंगी 2023 में अराउंड द वर्ल्ड, उसमें से एक लोकेशन जो है ये इंडिया की भी है, ठीक है। तो मोटो जीपी रेस जो होगी अगर हम देखें तो ये जो बुद्ध सर्किट है ये 5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है, इसका विड्थ 12 मीटर्स है। इसमें जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ट्रैक है वो एक ट्रैक 1006 मीटर्स का भी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं C295 MW एयरक्राफ्ट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है फर्स्ट C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस सेविल स्पेन से। तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 5 to 10 टन कैपेसिटी का है, एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि कई तरह के मैनूवर्स कर सकता है, मिशंस कर सकता है। 16 एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाईओवे कंडीशन में मिलेंगे हमें स्पेन से, और 40 जो है वो एयरबस टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में, ठीक है। अगर हम फीचर्स देखें इसके तो इसकी फ्लाइट एंड्योरेंस लगभग 11 घंटे की है, मल्टी रोल ऑपरेशंस कर सकता है ऑल वेदर कंडीशंस में, नाइट कॉम्बैट मिशंस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की इसमें फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। इसमें कटिंग एज रडार लगा है 360 डिग्री कवरेज के साथ, जो कि कंप्लीट पिक्चर देता है पूरे एयर स्पेस की, और इसको कैजुअलिटी और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। स्पेशल मिशंस, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, मैरीटाइम पेट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर तरह के जो है ये मिशंस कर सकता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is e-courts project. This topic is important for your governance section. Union Cabinet has recently given approval to the third phase of e-courts project, and it has been given the approval with a budget allocation of about 7,210 crore rupees. So what is the e-courts project? It was conceptualized on the basis of a report which was submitted by the E Committee of Supreme Court of India. The report was National Policy
and Action Plan for Implementation of ICT in Indian Judiciary 2005. So this E-Committee, it is a body which was constituted by the Government of India in pursuance of a proposal which was received from the Honorable Chief Justice of India to constitute this committee and assist him in formulating a national policy on computerization of the Indian judiciary. So it's a pan-India project which is monitored and funded by the Department of Justice, and it is meant for the district courts of the country also. So what does this project mean? So this project basically provides time-bound citizen-centric service delivery. It also helps in development and installation and implementation of decision support systems in courts. It will also help to automate the processes and to provide transparency and accessibility of information. It will also enhance judicial productivity. So the first phase of this e-courts project was concluded in 2015, and in which 14,000 something court sites were computerized. Under the second phase, 18,735 district and subordinate courts were computerized. So what are the major initiatives which have been launched under this project? So the case information software, which was based on customized free and open source software, has been developed. The second major important project initiative is the National Judicial Data Grid, which is meant to monitor pendency and disposal of cases in high courts and subordinate courts. And if you have been following the news, then just yesterday the Supreme Court also announced, rather the Chief Justice of India also announced, that Supreme Court will also be onboarded on this data grid. Okay, so this third phase of this project will be a centrally sponsored project which will be implemented over 4 years, and it will see digitization of entire court records. It will also help in setting up of 2,500 new modern virtual friendly courts, and establishment of 1,150 virtual courts, and 4,400 e-seva kendras in all court complexes. So about 3,108 crore documents will also be digitized as part of this project. So the next topic is National Judicial Data Grid. This topic is important for your governance section. So Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has recently announced that the Supreme Court is officially onboarded with the National Judicial Data Grid now. So he has described this decision as part of open data policy of the Supreme Court and as a step to bring transparency and accountability in the judicial domain. So what is National Judicial Data Grid? So it is a part of the e-courts integrated mission mode project, which was launched in 2015 to track judicial performance across different courts in the country. So it is working as national data warehouse for case data, including for the orders and judgments for courts across the country. So it is basically a monitoring tool to identify, manage, and reduce pendency of cases. It also helps in providing timely inputs for making policy decisions. It has been aligned with the National Data Sharing and Accessibility Policy, so as to provide open application program interface for the central and state governments, so that they can implement virtual platforms on their own in their own courts or the courts which are under their domain. So these features help to these features also help institutional litigants to evaluate and monitor cases so as to plan accordingly. It also helps to it also helps in monitoring tools to identify, manage, and reduce pendency of cases. And ultimately, the real aim of this project is to ensure better monitoring of court performance. So the next topic is multi-utility legged equipment. This topic is important for your security section. Indian Army has recently unveiled the multi-utility legged equipment at the North Tech Symposium, which was held recently in Jammu. So it's an autonomous load-bearing robot which has been developed by the Indian Army. Developed for the Indian Army rather. So it has been manufactured for humanless intervention to locate and eliminate the terrorists. So it will be having 360-degree cameras and radars, and it will be able to detect any threat and use the firing platform to shoot it down. It will either be operated on Wi-Fi or LTE technology, and that's why it will be workable for distances of up to 10 km from the location. It will be controlled by an easy to operate remote control. It will be capable of taking up projects with pre-fed missions. It will be able to climb hassle-free
at up to 45 degrees on the mountains, and also climb steps as high as 18 centimeters. So this was recently unveiled at the North Tech Symposium, which was jointly organized by the Indian Army's Northern Command, the Society of Indian Defense Manufacturers, and IIT Jammu. So this basically symposium is an event which comprises of exhibitions, product launches, interactions, technical seminars, etc. So the next topic is cirrus clouds. This topic is important for your environment section. So a new study has found a significant statistical correlation between thunderstorms, which occurs around the world, and the formation of wispy cirrus clouds, which might increase global warming. So these cirrus clouds are delicate feathery clouds which are made up of ice crystals, and they are thin and wispy in appearance. They often appear as delicate high altitude filaments or strands. They are usually white, or they have a light gray color. In the daytime, they are whiter than any other cloud in the sky. So they are commonly known as mare's tails also, because they have a shape like the tail of a horse. They are found at heights greater than 6,000 meters, and they are composed of icy crystals, and they originate from the freezing of super cold water droplets. So they generally occur in fair weather, and they point in the direction of air movement. Okay, so there are the other types of clouds also, like the cumulus clouds, which are puffy clouds. They look like puffs of cotton, and they have a distinct white or gray appearance. So they are indicators of weather. If they are not very tall, then they are indicators of fair weather. If they do grow tall, then they can turn into thunderstorms. So the bottom of these cumulus clouds, they are fairly close to the ground, and there is similarly another form of clouds called stratus clouds. They are low level cloud formations which are characterized by uniform and featureless appearance. They have a continuous grayish and whitish blanket. They are associated with overcast or cloudy weather conditions, and they form generally at the altitude of about 2000 meters above the sea level. So what is thunderstorm? Thunderstorm is a weather phenomena characterized by the occurrence of lightning, thunder, heavy rain, and sometimes strong winds or hail. So it's a type of storm which develops when warm, moist air rises rapidly in an unstable atmosphere, and it is the result of convection. So thunderstorms can vary in intensity, size, and duration. Okay. So the next topic is MotoGP. This topic is important for your international relations. So the first ever MotoGP Bharat Grand Prix is set to take place at the Budh International Circuit in Greater Noida, Uttar Pradesh. So this MotoGP is the premier motorcycle competition or championship in the world. It is the oldest motorsport championship in the world, which was first held in 1949. Its governing body is the FIM, and it's a non-stop race from start to finish without any pit stops. Each race lasts about 40 to 45 minutes over a distance of about 100 to 130 kilometers, depending upon the circuit, of course. So the championship is run on the basis of points. So points are won by each rider on the behalf of their team, and each team each team is judged on the basis of the points earned by the riders. Okay, so if we look at MotoGP 2023, it will have 11 teams and 22 riders, basically 2 riders for each team. And this season will have 21 Grand Prix races in 2020 in around the world, and one of these locations is in this season is India. Okay, so if we look at the Budh International Circuit, then it is a 5 kilometer long track with a width of 12 meters. It is the longest straight track on this track is 1006 meters. So the next topic is C-295 MW aircraft. So this topic is important for your security section. So Indian Air Force has received the first C-295 MW transport aircraft from Airbus in Seville, Spain. So this this is a transport aircraft of 5 to 10 ton capacity, and it's a versatile and efficient tactical transport aircraft which can perform a number of different missions. So 16 aircrafts will come in flyaway conditions from Spain, while 40 will be manufactured here by Airbus jointly with the Tata Advanced Systems Limited. So this aircraft will have a flight endurance of up to 11 hours, and it can carry out multi-role operations under all weather conditions. It will be able to operate at night combat missions from desert to maritime environments. So it is also capable of short takeoff and landing.
It has a cutting-edge radar with 360-degree coverage and to give a complete picture of its airspace. So this aircraft can be utilized for casualty or medical evacuation also. So it is equipped to handle special missions, disaster relief operations, and maritime patrol responsibilities. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.